rupees 50 paise per kilowatt hour. Part B. There is no such proposal under consideration of the government. Part C. Particulars. Total compensation amount 85 crores 48 lakhs 20,681. Amount released by Punjab government 71 crores 15 lakhs 96,361. Pending compensation amount 14 crores 32 lakhs 321. Interest accrued on amount released by RSD authorities and subsequently utilized by DC Office Kathua for payment of land compensation during July 1999, rupees 5 crores. Pending compensation amount rupees 8 crores 90 lakhs 51,320. Payment to be made as per various court orders 1 crore 10 lakhs 10,060. Pending interest as on 30th 9 2025 27 crores 2 lakhs 55,943. Total amount 37 crores 3 lakhs 17,323 rupees. Payment received from RSD during 2020 21 crores 8 lakhs 58,646 rupees. Balance on account of compensation including interest as on 30th 9 2025 15 crores 94 lakhs 58,677. Compensation disbursed 50 crores 51 lakhs 996 rupees. Reason for delay in full compensation. One of the major reasons for the delay in the release of complete compensation is the non-submission of requisite documents by certain landowners. These documents include application for compensation, bank account details, PAN card, Aadhaar card, etc. DC Kathua has issued multiple public notices urging the landowners to furnish the required documents to enable the timely release of compensation to the rightful claimants. Employment has been taken up by DC Kathua with the concerned dam authorities for providing of employment to 816 affected families. Employment to oustees. As per Government Order number 360 PW HYD of 2018, dated 28/9/2018, employment to oustees is to be provided by the Government of Punjab in accordance with the agreed rehabilitation and resettlement policy of both state governments. In addition, jobs to the oustees will be given by the Government of Punjab
मिनिस्टर इंचार्ज पब्लिक आपने जवाब दिया। Honorable Speaker, sir, Part A, बंद हुई है माइक। material area expenses heavy snowfall during winter दे दो which affects connectivity and causes difficulties for the residents. However, an institutional mechanism is in place to address essential requirements during winter with advanced planning and necessary arrangements made to ensure availability of basic services including healthcare and essential service supplies. Part B, representations have been received from the local population regarding construction of a tunnel in the area, citing its strategic and connectivity importance. Part C, a tunnel to connect material sector to the hinterland and get gully has been sanctioned under other than capital acquisition had preparation of DPR has been proposed for inclusion in the annual work plan 2026-27. सर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी तरफ से और मशरक़ की पूरी आवाम की तरफ से जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी और कमिश्नर सेक्रेटरी आनंद का इनकी मेहनत से, इनकी काविशों से जो कमिटमेंट भी की थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की वहाँ पे, तो उन्होंने मान लिया है और के लिए प्रिपेयर करेंगे। सर, इसके साथ साथ मेरी गुजारिश रहेगी कि एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, चीफ मिनिस्टर साहब वाकफ है इस एरिया से, लोला और बांडीपुरा टनल। तो उसमें सर दो चीज़ें, एक तो कनेक्टिविटी का है, दूसरा जो कि इस वक्त लोला में हमारे यहाँ पे जो है पानी की सख्त किल्लत है। आपने देखा बार बार यहाँ पे इशू रेज किया मैंने पानी के हवाले से। इस टनल से हमारे दो पर्पज सॉल्व हो जाते हैं, एक तो कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी, दूसरा जो पानी का मसला है हमारा, वो से हम पानी आसानी से ला सकते हैं। दो मसले हमारे हल हो जाएंगे इस पूरे एरिया के, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पूरे वाकफ हैं इस इलाके से, इनकी भी गवर्नमेंट है। जैसा मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल, क्योंकि पाइपलाइन में है, ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है, जिस तरह मैंने कहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बड़े इसमें संजीदा है, उनका पूरा दौर है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का भी इसके लिए भी इसको भी एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब का डिसीजन Honorable Speaker, sir, जहाँ तक ताल्लुक है इस मजेर का, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी इसमें काफी पर्सनल इंटरेस्ट लिया, और ऑनरेबल एमएलए साहब जब से उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, बार बार इन्होंने इस चीज से रिप्रेजेंटेशन दी है कि ये टनल बननी चाहिए। तो अब जैसे ये डीपीआर तैयार होती है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लिखेंगे और उसको टनल को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है सर। AQ नंबर 1240 मिनिस्टर इंचार्ज है। Sir, AQ number 1240. The Cancer Institute Oncology departments in the UT of Jammu and Kashmir are functioning as daycare centers exclusively for the administration of chemotherapy for the solid tumors. These services are being provided strictly in accordance with the mandatory guidelines issued by the Tata Memorial Hospital, and all standard treatment protocols are being meticulously followed. There is no violation of any mandatory TMC guidelines. Further, chemotherapy services are being delivered as per approved norms under the ABPMJAY scheme. No, it is not a fact that the anti-cancer injections, that is Ramucirumab, Projecta, Kisco, and immunotherapy drugs are available at Sikkim, Srinagar through JKMSL, RC drugs, which are part of cancer care of health benefit packages of Ayushman Bharat PMJAY SAT scheme or procured through JKMSL. All procurements of chemotherapy and supportive drugs are carried out strictly accordance with the prescribed financial rules, procurement guidelines and established procedures through JKMSL. However, in case of non-availability of drugs, local purchases or
if sorted out to only to make emergent clinical requirements in the interest of patient care. Such procurements are duly supported by